सो हेलो गाइस, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी। ठीक है, तो मेनली जो बीजेटी के कॉन्फ़िगरेशन है वो तीन तरीके के हैं: कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन इनके एप्लीकेशन अलग अलग है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सुटेबल है करंट एम्पलीफायर के लिए, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सुटेबल है वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए, और कौन सा कॉम्बिनेशन जो है सुटेबल है एज ए पावर एम्पलीफायर के लिए। और इनका जो मेन एप्लीकेशन है, किसका इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा है कम है, इसके हिसाब से ये इनका एप्लीकेशन पार्ट बनेगा। बट जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन कौन से बताया मैंने: कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। क्लियर है? सो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तीन तरीके से है, दैट इज कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। ठीक है, बट इस लेक्चर में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में हम लोग इसकी डेफिनेशन को लेंगे और जो डायग्राम है उसको लेंगे। ठीक है, सो पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, दिस इज कॉमन बेस डायग्राम, कॉमन बेस। सो इट इज बेस। ठीक है, यहां तक। देन एंड वी आर टेकिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहां तक। सो जो हम लोगों ने जो एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है उसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये रहा P, ये रहा N एंड ये रहा N। ठीक है, नाउ दिस इज कलेक्टर साइड एंड दिस इज एमीटर साइड। ठीक है बेटा, यहाँ तक। नाउ एमीटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस, सो इट इज प्लस माइनस, एंड दिस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस, सो इट इज प्लस एंड माइनस। ठीक है, यहाँ तक। नाउ so it is KCL is what? IE is equals to IB plus IC. We know that this thing. ठीक है, यहाँ तक। So this is IC, this is IB and this is what? I in case of NPN transistor. Now अगर मैं इनपुट और आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पर इनपुट देखूं क्या चीज होगी, इनपुट पैरामीटर, क्योंकि आगे हमें इनपुट कर्व और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को भी समझना है। तो अगर हम यहाँ से देखें इनपुट क्या है, इनपुट इज BBE, IB द इनपुट पैरामीटर्स, और मैं आउटपुट पैरामीटर की बात करूं, आउटपुट पैरामीटर, सो इट इज व्हाट? VCB, IC। सो दीज आर द आउटपुट पैरामीटर। क्लियर है यहां तक? होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन बेस इज कॉमन, so input is applied at what? Base and emitter side, at base and emitter, and output is taken across what? Collector and बेस। ठीक है, सो आउटपुट इज टेकन अक्रॉस कलेक्टर एंड बेस। क्लियर है? सो इनपुट पैरामीटर हमने निकाल लिया, आउटपुट पैरामीटर निकाल लिया, ये बात क्लियर हो गई है। केसीएल भी लगा के देख लिया है ना। अब अगर एक चीज और मैं यहां से बताऊं, सिंस वी आर मेकिंग द बेस कॉमन, so we have two terminal at the input side and two terminal at the output side. So we have four terminal is called two port. So you can also find the two port or H parameter in case of either the common base or common collector or common emitter configuration, but वो चीज हम बाद में देखेंगे। बट मैं बता रहा हूं जो ट्रांजिस्टर है that can be modeled as if you make one terminal common, then it can be analyzed with the help of two port analysis. क्लियर है? सो आई होप सो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कॉमन बेस में हम लोग क्या करते हैं, बेस को कॉमन करते हैं जिससे कि जो इनपुट है वो BBE एंड IB मिलता है, और जो आउटपुट है दैट इज अक्रॉस द कलेक्टर एंड बेस, सो VCB एंड IC इज द करंट। क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट में मैं आपको क्या समझाने वाला हूं
In case of second point, we have the input characteristic and we have the output characteristic. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से हमें एक वर्ड मिलेगा दैट इज कॉल्ड अर्ली इफेक्ट और बेस विद मॉड्यूलेशन. क्लियर है? इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक से इनपुट का क्या रेजिस्टेंस होता है वो समझ में आएगा, आउटपुट का क्या रेजिस्टेंस होता है वो समझ में आएगा. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पॉइंट दैट इज कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट में समझते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है बेटा. नाउ सबसे पहले मैं डेफिनेशन देता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन. इट इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन, इट इज ए कर्व ड्रॉन between input voltage and current for different value of output voltage. What is that meaning? सबसे हम पहले क्या समझते हैं. इनपुट क्या है हमारा? इनपुट इज व्हाट? BBE and IB. So it is a curve drawn between, it is a IE. It is a curve drawn between the input voltage and input current for constant value. और अगर इस पे इफेक्ट देखना है कि जो आउटपुट को अगर हम चेंज करेंगे then what is the effect? For constant value of आउटपुट वोल्टेज दैट इज कॉल्ड VCB. ठीक है. बट अगर आपको इफेक्ट देखना है देन आई विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज. ठीक है. सो ड्रॉ करते हैं नाउ. कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं. देखो ये. सो इट इज IE एंड इट इज BBE. नाउ सिंस अगर हम बात करते हैं वी हैव NPN ट्रांजिस्टर ना, एंड वी हैव दिस ट्रांजिस्टर. दिस इज योर ट्रांजिस्टर, दिस इज बेस, this is collector, this is emitter. Clear है बेटा? Now this is your P, this is your N and this is your N. Clear है यहाँ तक? अब अगर आगे मैं समझाता हूं यहाँ पर P2N is one diode and P2N another diode, P2N another diode. ठीक है यहाँ तक? So when base emitter junction is forward bias, this diode is on, then that voltage is called BBE and the current is what? IE. So this characteristic of curve is similar to diode forward bias characteristic. ठीक है यहाँ तक. So this input characteristic is similar to diode forward bias characteristic, because this, in case of emitter junction forward bias, this diode is on. Then when diode is on, the curve is similar to what? The diode forward bias characteristic. So this curve is like that. Now this curve is like that. Now this voltage is called 0.7 volt in case of silicon material. Clear है यहाँ तक? पक्का बात समझ में आ गई. Now अब हम चेक करते हैं कि अगर इस कर्व पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में मैं अगर जो आउटपुट वोल्टेज है उसको चेंज करता हूं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है. तो यहीं पर एक टॉपिक निकल के आता है दैट इज कॉल्ड अर्ली इफेक्ट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस विद मॉड्यूलेशन. समझते हैं. सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं कि अर्ली इफेक्ट और जो बेस विद मॉड्यूलेशन है वो क्या है. So it is the effect of collector to base voltage on base width. So क्या है? It is the effect of collector to base voltage on base width, or you can say the reverse bias voltage. It is the effect of reverse bias collector to base voltage on base width. क्या मतलब है इसका समझाता हूं. पहले आपको देखिएगा बेटा. Now this is your NPN transistor, this is your NPN transistor, this is N, this is N and this is P. Clear है यहाँ तक? Now since this emitter is highly doped and
collector is moderately doped and base is less doped or lightly doped. So it is emitter, it is collector, and it is base. Now since the emitter base junction is forward bias, so the depletion layer at this emitter base junction side is very low. Clear है यहाँ पे? So this depletion width at the emitter base junction side is very narrow. Clear है ना? Clear है? Now collector base junction is reverse biased. Clear है? Then depletion width at the collector base junction side is more. ठीक है? But since the collector base junction, at the collector base junction, P is lightly doped, but N is moderately doped. So the depletion width will penetrate into the base side. क्यों होता है ऐसा बेटा? क्योंकि width into doping equals to constant होता है ना. अगर आप डोपिंग लेवल को बढ़ाएंगे देन विद उधर क्या होगी? कम. तो डोपिंग किधर ज्यादा है? डोपिंग ज्यादा किधर है? कलेक्टर साइड है. तो जो डिप्लीशन विद है वो किधर ज्यादा एक्सटेंड होगी? बेस साइड. किधर होगी? बेस साइड. सो दिस इज द डिप्लीशन विद एट विच साइड? कलेक्टर साइड, कलेक्टर बेस जंक्शन साइड. क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से. क्लियर है ना? This is called effective base width. This is called effective base width. Effective base width. Where recombination take place. Where recombination of electron and holes take place. ठीक है यहाँ तक ना? Clear है? Now as the reverse bias voltage, collector base bias voltage increases, depletion width increases. Then the depletion width increases toward what side? The base side. Toward the base side. Clear है यहाँ तक? So अगर मैं बात करूं then depletion layer will be like that. Is it okay with you? Clear है? So as collector base voltage increases, depletion width increases, hence W effective base width decreases. Clear है? Then recombination of hole and electron decreases. Done. Decreases. Then more number of electron will collected at the collector side. Then more number of electron will be collected at the collector side. So IC increases. Clear? And IB decreases. ठीक है यहाँ तक? Now since alpha is what? IC upon IE. So as IC increases, alpha increases. Clear है यहाँ तक? Now beta is what? Alpha 1 minus alpha. So as alpha increases, beta increases, alpha increases, this factor decreases, so alpha more times increases. Clear है? तो मीनिंग क्या हुआ? जैसे ही मैं कलेक्टर बेस वोल्टेज को इंक्रीज करता हूं, डिप्लीशन विद जो है बेस साइड और इंक्रीज करती है, जिससे कि जो इफेक्टिव बेस विद है, दिस इफेक्टिव बेस विद वेयर द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल टेक प्लेस डिक्रीजेस, देन the base current decreases and collector current increases, which makes alpha increases, but beta increment is large as compared to alpha. Clear है? So this is called early effect. Clear है? So simple से मुझे समझ में आ रहा है, as BCV increases, IC increases. Clear है? And IE increases. ठीक है यहाँ तक? So we will have BCV effect. Suppose this is BCV equals to 0 volt. Then for the BCV equals to this, so BCV equals to 5 volt, VCV equals to 10 volt. So this curve will shift to left side. This is the early effect on the input characteristic of collector base configuration site. ठीक है? नाउ अगर मैं अर्ली इफेक्ट का इफेक्ट देखूं, सो अर्ली इफेक्ट का इफेक्ट
of VCB, or we can say early effect, curve shift to left side. Is it okay with you? And the second thing is what? Now the slope is equals to 1 upon input resistance of this curve. Clear है यहाँ तक? Input resistance of this curve. Now slope equals to what? It is IE upon BBE. Clear है यहाँ तक? Now if you see this, when you increase the BCB, clear है BCB, then the IE is what? Increases. ठीक है यहाँ तक? So third thing is what? The input resistance of this collector base configuration is very low. ठीक है यहाँ तक? Clear? Why it is low? Because if you approximate this curve as this, as a constant voltage source model, this is similar to what? Ideal voltage source. So in case of collector base configuration, the ideal input resistance of common base configuration is 0, but practically it is very low. So it is a range of 10 to 100 ohm only. ठीक है यहाँ तक? So अर्ली इफेक्ट क्लियर हो गया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई, इस पे VCV इफेक्ट, स्लोप समझ में आ गया. बाई चांस अगर आपका क्वेश्चन भी आ जाए तो भी क्लियर हो जाएगा. और VCV का जो इफेक्ट है उससे कर्व किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा. क्लियर है? तो आई होप सो कैरेक्टरिस्टिक में जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्लियर हो गई होगी. अब हम समझते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे ड्रॉ होगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपनी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं. इट इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन BCB and IC. Sorry, it is IE. Input is IE, so it is IC. It is a curve drawn between the VCB and IC for constant value of input current. But we will draw it for different value of what the इनपुट करंट दैट इज कॉल्ड IE. ठीक है यहां तक? सो इट इज IE. नाउ कर्व को ड्रॉ करते हैं बेटा, देखते हैं. सो इट इज IC एंड दिस इज BCB. नाउ अगर हम बात समझते हैं ना, IC इक्वल्स टू व्हाट? IC इक्वल्स टू अल्फा IE प्लस ICU. नाउ इफ IE is 0, that is emitter is open, then IC equals to ICO, that is called reverse saturation current, which is independent of VCB, because it is the current due to thermally generated magnetic charge carriers. ठीक है यहाँ तक? So when IE is 0, the IC is only equals to this thing. This is the small amount of current when IE is 0. Now as IE increases, IC also increases because it is add up into reverse saturation current. So we will have curve like that thing. This is the curve like that. Clear है? So it is for suppose IE1 that is equals to 1 microampere, then IE2 equals to 2 microampere and IE3 equals to 3 microampere. Clear है यहाँ तक? Now the region where we have very less current or no current, if you neglect the ICO, then IC is 0 at this point. So this region is called cutoff region. The region where the current is very small. Clear है? And both junction are reverse bias. Clear है? This amount of current is known as ICBO.
क्लियर है यहाँ तक, और जस्ट रिवर्स द एक्चुएशन करंट. Now the region where we are having high voltage and high current, then this region is called active region. This region is called active region. Active region. Now in active region, IC is equals to alpha I. Alpha I. Now you see that as we increases I, the IC is also increases. Suppose this is the IC, then it is a IC1 corresponding to IE1, IC1, then this is IC2, and this is what? IC3. So in active region, the collector current is completely dependent upon the emitter current and is independent of what? The VCB. Clear? So in active region, in the region where the collector current and the emitter current are in direct proportion, and it is independent of collector to base voltage. Okay, now next region is called this region is called saturation region. Now the region where we have small voltage, we have this small voltage, this is called VCE set, that is equals to 0.2 volt. Now this is the region where a small voltage and high current exist, and in this region both junction are forward biased. Clear है, बात समझ में आ गई. So this is the characteristic of common base configuration output side or output curve. Now if you see, this curve is what? This curve is almost similar to this type. So this is I and this is V. Clear है? So we have constant current irrespective of the voltage, Clear है? So slope is equals to what? 1 by R naught. Clear है? So if you change the voltage, then it is delta I upon delta B. Clear है? So if you change the voltage from V1 to V2, but there is no change in current. So change in current is what? 0. So slope equals to 0 upon delta B. Clear? And that is equals to 1 upon R naught. So 1 upon R naught equals to infinite. So this configuration is having high output resistance, and practically it is order of 50k ohm. ठीक है यहाँ तक. So this is all about what? Characteristic. So हमने पहले पॉइंट में डेफिनेशन पढ़ लिया, डायग्राम पढ़ लिया, और दूसरे पॉइंट में हमने कैरेक्टरिस्टिक प्लस अर्ली इफेक्ट और जो बेस विद मॉड्यूलेशन है उसको कंप्लीटली समझ लिया है. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट समझते हैं जो उसका गेन है. तो गेन के लिए हम इसका डेरिवेशन ड्राइव करते हैं. क्लियर है? सो स्टार्ट करता हूं गेन. थर्ड पॉइंट लेते हैं कॉमन बेस करंट गेन. कॉमन बेस अगर करंट गेन की बात करूं, सो करंट गेन होता है अल्फा. इट इज आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, and output is what? IC, and input is what? IE. Clear है यहाँ तक? Now you know that if you have emitter, at emitter it is 10 milliampere current, and out of that 9 to 10 milliampere is collected at collector. Clear है? And 1 to 2% is the recombination at the base side, so there will be some difference of input and output current. Clear है? So it is just close to 1. So alpha is 1, close to 1, not exactly 1. Clear? So practically अगर मैं बात करूं, practically alpha is less than 1, always. It is 0.95 to 0.98, and maximum value is it is 1. Clear है? And alpha never will be greater than 1. ठीक है यहाँ तक ना. आगे अगर मैं बात करता हूं, IC is what? अल्फा IE plus ICBO. ठीक है. Now if IE is very greater than ICBO, then that current can be neglected. Then IC is just equals to
alpha IE, then alpha is what? IC upon IE. This is called common base current gain. Now IE is what? IE is equals to IB plus IC. Now IC value is what? IB plus alpha IE plus ICBO. Now that alpha IE is taking common, so IE is common. It is 1 minus alpha plus IB plus ICBO. So IE in case of this configuration is IB 1 minus alpha plus 1 ICBO 1 minus alpha. Clear? Now if ICBO is neglected, then IE is approximately equals to IB 1 minus alpha, or IB equals to 1 minus alpha times IE. ठीक है बेटा यहाँ तक. So these relations are very very important in while solving the numerical. क्लियर है? सो करंट गेन समझ में आ गई. अब हमारे पास जो है 2 पॉइंट रह गए हैं कि हाउ द एम्पलीफिकेशन अकर्स इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और उसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट. तो दोनों स्टार्ट करते हैं, एम्पलीफिकेशन एंड एप्लीकेशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे थे कि एम्पलीफिकेशन कैसे होता है. सो एम्पलीफिकेशन, नाउ एम्पलीफिकेशन के लिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने. लेट द इनपुट वोल्टेज इज 200 millivolt, our input is 20 ohm and our output is 100k, clear, and alpha is just close to 1. ठीक है. Then according to Ohm's law, VI equals to I of I into RI, and VI is 200 millivolt into 10 to the power minus 3, and II is IE, that is input current, and RI. So from that I of E, that is I of E is what? 200 into 10 की power minus 3 divided by R of I, that is what? 220 ohm. ठीक है. So it is 10 milliampere. 10 milliampere. Now current gain is given to you, that is alpha is IC by IE, then IC equals to alpha times IE. Now since we are assuming that alpha is 1, so it is also 10 milliampere. Clear है यहाँ तक? Now if you see the current gain, the AI is what? Output upon current upon the input current. Output is 10 milliampere and input is also 10 milliampere. So AI is 1. AI is 1. So current gain is unity. Current gain is unity. Is it okay? So this amplifier is not suitable. This amplifier is not suitable to work as a current amplifier. Clear? So it is drawback. Now वोल्टेज गेन देखते हैं. सो पहले वोल्टेज गेन के लिए वी नॉट इक्वल्स टू आर नॉट इंटू आई नॉट एंड आर नॉट इंटू आई सी. सो वी नॉट, आर नॉट इज 100 के एंड आई सी इज 10 मिली एम्पियर. सो इट इज कैंसिल आउट. सो इट इज व्हाट? वी नॉट इज 1000 वोल्ट. ठीक है यहाँ तक? क्लियर? नाउ वोल्टेज गेन इज व्हाट? वी आउटपुट अपॉन वी आई. सो 1000 अपॉन 200 millivolt. 200 millivolt, that is 10 की पावर प्लस 3 हो जाएगा. सो इट इज 0 से 0 कैंसिल 5. सो इट इज 5000. इफ यू टेक दिस एग्जांपल, सो गेन इज वेरी वेरी हाई. 5000 वेरी हाई, वेरी हाई. क्लियर है? तो यहीं से इसके एप्लीकेशन निकल के आते हैं कि एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया है. सो नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करता हूँ एफ पॉइंट में एप्लीकेशन इसकी. सो एप्लीकेशन क्या होगा? कॉमन बेस configuration is suitable for voltage amplifier at high frequency, but not suitable for current amplification. ठीक है यहाँ तक? ना लास्ट पॉइंट एक और देख लेते हैं. हमने कहाँ तक देख लिया? ए बी सी डी ई एफ जी, एफ तक देख लिया. जी पॉइंट देखते हैं ना. जी पॉइंट में अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता हूँ. सो इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने के लिए जरा समझिएगा. हमारे पास कॉमन बेस का यही डायग्राम था. दिस इज कॉमन बेस. सो ये बेस था, ये कलेक्टर था और ये इमीटर. सो दिस इज द इनपुट वोल्टेज.
and this is input current, this is input current, this is IC and this is IB. ठीक है, तो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं ना. इनपुट दिस इज BE, देन वी हैव सम रेजिस्टेंस, क्लियर है. या हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इसको इक्विवेलेंट डायग्राम को देखेंगे बेटा. Now we have input voltage, that is V of I. Then we have a resistance, input resistance, that is of Ri. Then we have a source, that is what, BBE, clear है, at the input side. And this is what, base common. Then we have the output side. At the output side we are having the current gain, clear है. So this direction is this side, so it is a plus minus C, it is B, it is also B, base common. So IC equals to alpha I, and in practical system we have a long resistance, that is R0. So it is the equivalent diagram of a common base configuration. Is it okay with you? Now अगर यहाँ से हम देखें, so your VJT is having dependent sources at the input side and output side. So it is a controlled voltage source, and this is a controlled current source. So BJT equivalent circuit is having the dependent sources, either the voltage source or the current source. So application clear हो गया होगा, amplification clear हो गया होगा, clear है. यहाँ तक कॉमन बेस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा. सारे पॉइंट जो थे मैंने लगभग कवर कर दिए. नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की तरफ देखते हैं क्या है.